So welcome back to Aakash BYJU'S NEET YouTube channel. Once again, I am Pushpendu and today we are going to continue with our Mission MBBS. We are dealing with the chapter Structural Organization in Animals and ये तीसरा session है. All of you. So sorry for being a bit late. It's because of your last session was continuing and then we had to set it up. So I think you all are here. Thank you for joining in. Let me see कौन कौन आ चुके हैं for the session. Sugata, I see Anshika, Sahil, Aditi, Vashu. I have Lakshmi, Bhavya, Jahan, Sugata. Okay. Perfect. Gul, Aditi, Sir is here. I'm here. Mayank, Lakshmi, Jayashri, Sanjana, Ahana, Aditi, Lakshmi. Perfect. ठीक है. So students आ चुके हैं. Now it's time to start the session. I hope you know about ANTHE right now. It's a big opportunity for you to visit NASA, and that too free of cost. You have to appear for this examination which is called ANTHE, right? It's a very competitive examination. You know about the Mission MBBS which is going on 12th class, 3rd and the 11th class, Tuesdays and Thursdays, 12th, 11th, Monday, Wednesday and Friday. 3, 4, 5 and 6 p.m. are the slots. We also have a droppers batch, okay, which is started on 1st of August. So if you are targeting next year and you have taken a drop, this is a perfect opportunity for you. Also, do use our app, try it 14 days free and see how personalized learning happens here. Of course, do like the session, subscribe the channel, comment on the section, and then spread the session to all your friends. Okay, एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं. प्रेम हमेशा यही जवाब देते हैं, ANTHE registration done sir. Right. Perfect. Great. Levels of organization हमने पढ़ा है already. Cell followed by your tissues, followed by your organ, then the organ system, and then you have the organism, right? You know about it. We have studied about the various animal tissues. Epithelial के बारे में हमने पढ़ा है, nervous tissues के बारे में पढ़ा है, right? You remember the structure, connective tissue and muscular tissue, right? Okay, epithelial tissues. What did we study about epithelial tissues? Simple and compound. In simple, we have studied about the squamous, cuboidal, columnar and pseudo-stratified epithelium, right? Compound में हमने पढ़ा था stratified and transitional. Okay. Ma'am, good evening. Zubair, Bhagya, Rani, सब आ गए. Perfect. Okay. इंटरसेलुलर जंक्शंस के बारे में हमने पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल पूछा जा सकता है. द टाइट जंक्शंस, द एडहेरिंग जंक्शंस एंड द गैप जंक्शंस. एक बार पिक्चर देख लो सब. ओके, टाइट जंक्शंस, एडहेरिंग जंक्शन एंड द गैप जंक्शंस. फंक्शंस इनके बहुत इंपॉर्टेंट है. नर्वस टिश्यूज, वी स्टडीड अबाउट दिस. न्यूरल टिश्यूज, न्यूरल टिश्यू में न्यूरॉन्स और ग्लियल सेल्स के बारे में मैंने पढ़ाया है, राइट? इन द ग्लियल सेल्स, वेरियस टाइप्स ऑफ द ग्लियल सेल्स are the astrocytes, microglia, Schwann cells and the oligodendrocytes. अगर आपने पढ़ा है, अगर आप रिवाइज करके आए हो तो जवाब दो, what is the function of Schwann cells? What is the function of Schwann cells? Can you pass me a water bottle please? So बताओ, what is the function of the Schwann cells? Tell me what is the answer? Schwann cells. Function क्या है? Myelin sheath formation. Perfect. Myelin sheath formation is the function, है ना? Insulation, right? और इसके वजह से क्या होता है? I had talked about the signal transmission. जल्दी या slow? Hello अन्वेषा. जल्दी होता है या स्लो होता है? टेल मी. गुड इवनिंग अन्वेषा. इंसुलेशन, ओके. अपर्णा, अर्पिता.
fast. Kalpesh has given the answer fast. Yes. अच्छा, like session को like कर दो, है ना? You know, I've been telling you that आपके likes, आपका जो प्यार दिखता है यहाँ पे, that is the energy booster for all the teachers. Trust me, है ना? Well, have a look at this. Have a look at this. You know, this is a house I'm showing you. It's broken. Bricks दिख रहा है, काफी टूट गया है. But if I if you compare with this one, काफी symmetry है, काफी organized है, right? So the question is, यहाँ पे you can see the bricks are together. What is the substance which is holding these bricks together? Can you answer? रानी, एनिमल किंगडम का डाउट है तो कैन यू आस्क इट टुवर्ड्स द एंड, और रादर आप कमेंट सेक्शन पे पूछ लो ना, है ना? बच्चे नहीं तो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे. वेरी फास्ट ऑल ऑफ यू हैव गिवन द आंसर करेक्ट. यस, वेरी फास्ट. थैंक यू जान. टेल मी, व्हाट इज द सब्सटेंस व्हिच इज होल्डिंग these bricks together? Cement. Rani, perfect. Yes. Now have a closer look at this. I'm showing you. ये जो बीच बीच में है, जो ये brownish rather grayish चीजें जो है, it's nothing but the cementing substance. इसमें cement होते हैं, there is sand, so these help in sticking these bricks together. तो हमारे बॉडी में भी ऐसा कुछ होना है, करेक्ट? सेल्स है, टिश्यूज है, बट सीमेंटिंग सब्सटेंस तो होनी चाहिए. डू वी ऑल्सो नीड द कनेक्टिव एजेंट्स, रादर द कनेक्टिव एजेंट्स? सीमेंटिंग सब्सटेंस हमारे बॉडी के टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो कनेक्टिव एजेंट्स. सो यस, वी डेफिनेटली रिक्वायर देम, एंड दैट इज वेयर कम्स द कनेक्टिव टिश्यूज पार्ट. तो हम पढ़ेंगे अब कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में. हाय दीपमन. We'll talk about the connective tissues. Okay, epithelial tissues done, पढ़ लिया हमने. Nervous tissues पढ़ लिया. अब बात करेंगे connective tissue के बारे में. Fine. So connective tissue के बारे में पढ़ते हैं. Most abundant body tissue. This is one of the most abundant body tissue. This is present throughout our body and these are generally vascular in nature. मतलब क्या है? इसमें blood vessels supplied है. Well supply of blood vessels. Okay. Done. नोट कर रहे हो? आर यू नोटिंग दीज पॉइंट्स डाउन? बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, परफेक्ट. चलो, एनी दीपमन या सीन यू वासु, परफेक्ट. चलो आगे बढ़े. हाँ, नाउ फंक्शन क्या है? कनेक्टिव, कनेक्शन, लिंक, या यही फंक्शन है. लिंक्स एंड सपोर्ट्स अदर टिश्यूज ऑफ आवर बॉडी, एज द नेम सजेस्ट, कनेक्टिव टिश्यूज. सो कनेक्टिव टिश्यू कुछ सिक्रीट करते हैं क्या? लेट्स सी. कनेक्टिव टिश्यू secretions. Secretions of the connective tissues. Yes, the structural proteins as well as the modified polysaccharides. Okay, so cells of the connective tissues, they are able to secrete the structural proteins. Some are able to secrete the modified polysaccharides. These are very important. Blood is an exception in this case. Blood is an exception in this case. ठीक है. Structural proteins की बात करें तो it provides strength. The structural proteins will provide strength. लिखो इधर. Strength. Okay. Rather, I would say strength, elasticity, flexibility, etc. ठीक है. अब modified polysaccharides की बात करूं तो these actually accumulate between the cells and the structural proteins. So got it, all of you? नोट साथ में बना रहे. Yes, very good. बेटा मयंक, वैस्कुलर मतलब जहां पे ब्लड वेसल्स सप्लाई है. वैस्कुलर टिश्यूज मतलब वो टिश्यू जहां पे दे हैव सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स. श्रुति, दिस इज योर फर्स्ट क्लास. श्रुति, वेलकम टू माय क्लास. श्रुति बेटा, अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर आपको मजा आ रहा है क्लास में, then please let me know honestly. ठीक है? Provide question into the, wow, who is this? Ranhod, right? If I have pronounced it correctly. Sorry if I have not.
Chayesh is a better, I think that is a easy one. Yes, Chayesh, I've got your answer. Very nice. Fatima, hi. चलो, ये modified polysaccharides act as ground substance, or rather you can say ground matrix. Ground matrix, ठीक है? It helps in holding the tissues together. Holding, है ना? लोकेश, this is your first class. Again, same thing for you. अगर आपको अच्छा लगा मेरा क्लास तो बिल्कुल बताना, ठीक है? Yes, Lakshmi, it is clear. Perfect. Pintu, hello. Hello, Pintu. Hi. Isha. Oh, so many new students. बहुत सारे नए लोग आ चुके हैं. I'm so happy about it. मतलब इसका मतलब यही है कि आपको अच्छा लग रहा है ना? चलो आगे बढ़े. Come on, system. हाँ, ठीक. चलो, प्रोटीन्स, कोलाजन, इलास्टिन, इसके बारे में आपने सुना ही होगा. कोलाजन प्रेजेंट इन द बोन्स एंड इलास्टिन इट इज प्रेजेंट इन द स्किन. ये जो इसका फॉर्म है, राइट? और अदर इसका जो इलास्टिन, इलास्टिसिटी, स्ट्रेचेबिलिटी, बिकॉज ऑफ दीज. ओके, तो आपको पता है कि कोलाजन दिस इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन फाउंड इन द एनिमल बॉडी. मोस्ट abundant. Okay, most abundant protein found in the animal body. Fine. Now चलो अब थोड़ा पढ़ते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स के बारे में. यहाँ पे what we will study about is collagen and elastin in detail. इसके functions देख लो. The functions, of course, I told you: strength, elasticity, flexibility. Strength, elasticity, flexibility. Fine. Okay, so collagen and elastin. Biosphere, yes, Ashrid, right? That is Rubisco, correct. Very good. है ना? Collagen are generally white and unbranched. Elastin is generally appears to be yellow. Okay, they are branched. Can you check? There's some problem. This is branched. It's fine, right? So there is a prayer. Okay, fine. आगे बढ़े. Modified polysaccharides, yes, they act as matrix or the ground substance. I have already mentioned this to you. Types of connective tissue. Let's study connective tissues. इसके types पढ़ते हैं. Loose connective tissue. You have the dense connective tissue. नाम से समझ में आ रहा है. And the specialized connective tissues. Let's study about the loose connective tissue first. Loose connective tissue. These are, of course, loosely arranged cells and fibers. They have loosely arranged cells and fibers. They have a semi-fluid matrix. Functions, definitely binding the tissues. See here, okay? They are embedded in a semi-fluid matrix. This is the tissue which holds the organs. Organs together. Perfect. Now, loose connective tissue types. Let's see. Areolar and adipose. Areolar and adipose. See the structure. इसके बारे में पढ़ेंगे. Areolar and adipose. पहले देख लो ये क्या है. Bubble wrap. Can you tell me on the chats? क्योंकि बेटा ये secrete नहीं करता है. Secretion की बात कर रहा था तो यहाँ पे exception इसलिए क्योंकि secrete नहीं करता है ना. Bubble wrap packing में क्यों help करते हैं? Why do we use bubble wrap for packing? Can you tell me? Jaspinder, not sure, but generally May, June, generally May में ही होता है. So you can expect. May के लिए तैयारी करो.
हाँ रानी वही बोलो ना, सेक्रीशन, उस टाइम पे मैं सेक्रीशन का पढ़ा रहा था, है ना। नॉट गेट डैमेज्ड, आयुष वाई इट प्रिवेंट्स डैमेज, प्रोटेक्शन, यस। इसमें जो एयर पॉकेट्स बना दिया गया है जिसकी वजह से कुशनिंग इफेक्ट होता है, it provides a cushioning effect. So here comes the areolar tissues. Areolar, right? Areolar tissues, these are the connective tissues which act as packing material. It covers the blood vessels, okay, it covers the organs, got it. It also does provide structural framework of the body, ठीक है, areolar. Now these are present subcutaneous, मतलब under the skin. Subcutaneous मतलब under the skin. Functions is of course support framework for the epithelium, ठीक है, देख लो. ये जो वर्ड है ना एरियोलर, इट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड विच मीन्स ओपन स्पेस, इट मीन्स ओपन स्पेस, ठीक है. सो दीज आर द टिश्यूज विच आर नॉट टाइटली पैक्ड, hence its name, it is not tightly packed. So इसके बीच में क्या होगा, spaces, you have space, if you can see you have proper space in between them, तो इसीलिए ये tightly packed नहीं है, and hence the name areolar tissues, जिसका मतलब लैटिन मतलब क्या है, open space, got it. कंपोजिशन देखते हैं, let's see. The macrophages which are phagocytic in nature, इनमें क्या क्या है, macrophages है which are phagocytic in nature, of course the fibroblasts, okay, fibroblasts, secretion of collagen and elastin. Fibroblast वो है जो कि collagen elastin secrete करते हैं. Mast cells are there which secretes the matrix, the histamines, serotonin and heparin. Histamine is a vasodilator, ठीक है. इससे क्या होता है, enlarge the blood vessels, fine, which will allow more blood flow. Histamine vasodilator है, ठीक है. आगे बढ़े, देखो मैक्रोफेजेस, फाइब्रोब्लास्ट्स, मास्ट सेल्स, composition, phagocytic, yeah, I have talked about all these, ठीक है. Serotonin does the exact opposite of histamine. Histamine vasodilator था, serotonin vasoconstrictor है. It is a vasoconstrictor, ठीक है, मतलब डायमीटर छोटा कर देगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, बीपी इंक्रीज्ड, गॉट इट. हेपारिन इज अ एंटी कोआगुलेंट, heparin is an anticoagulant, it prevents the clotting of blood, got it. चलो आगे बढ़े, नाइस. देखो मैक्रोफेजेस, फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल्स. नाउ एडिपोज टिश्यूज की बात करते हैं, तो एरियोलर समझ में आ गया. एडिपोज टिश्यूज, एडिपोज टिश्यूज ऑफ कोर्स सबक्यूटेनियस अंडर द स्किन है, एरियोलर टिश्यूज के जैसे ही. फंक्शन ऑफ कोर्स स्टोरेज ऑफ फैट्स. सी हियर एडिपोज टिश्यू दिख रहा है, थोड़ा zoomed in version, I'll show it to you. Fat storage area, this is the nucleus and the plasma membrane as you can see. एक चीज दिखा देता हूं, see here, whale, अगर whale की बात करूं, they have a thick layer of this adipose tissues and this is known as the blubber. I'll show it to you, see here, देखो कितना thick है, इतना thick fat layer है. Function क्या है, it protects from mechanical damage, helps in maintaining buoyancy, acts as a reserve food material, acts as an insulator. Yes, prevents allergies.
Got it? Now dense connective tissues. Dense connective tissues के बारे में पढ़ते हैं. Compactly arranged, as the name suggests, they are compactly arranged cells and fibers. See here, देखो कितना compactly arranged है. Fine, ज़्यादा space नहीं है इसके बीच में. Now it can be regular tissues. It can be regular tissues and it can be irregular tissues also. I'll show you regular and irregular. देखो रेगुलर मतलब कुछ नहीं है, इसका पैटर्न देखो अरेंजमेंट का, एक पैटर्न दिख रहा है आपको. बट इरेग्युलर यू डोंट सी अ पैटर्न, डेफिनेट पैटर्न. एज द नेम सजेस्ट इट इज इरेग्युलर, इरेग्युलरली अरेंज्ड. रेगुलर टिश्यूज, यहाँ पे द फाइबर्स ऑफ द डेंस कनेक्टिव टिश्यूज आर अरेंज्ड इन अ पैरेलल मैनर. दे आर बंडल्ड पैरेलली. कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट इन अ रो बिटवीन द पैरेलल बंडल्स ऑफ द फाइबर्स. एग्जांपल्स देख लो बेटा. टेंडन्स, मसल टू द बोन, connects muscle to the bone. Ligaments, bone to bone connection. यहाँ पे देखो छोटा सा example. Binds, they bind muscle to the bone. Tendons, यहाँ पे these are skeletal muscles. Ligaments, these binds bone to the bone. Fine. Irregular tissues. हाय सरोज. मंजू क्या पूछ रहे हो? आप बोल रहे हो, बता रहे हो, पूछ रहे हो? आई डिड नॉट अंडरस्टैंड. आगे बढ़े. ओके. यहां पे डू यू नोटिस दैट इट इज वेरी हैफजेटली अरेंज्ड. इट इज वेरी हैफजेटली अरेंज्ड. जहान, ओके फाइन, टेक इन योर सजेशन. विल सी इफ यू कैन अरेंज फॉर सच अ सेशन. ठीक है. Irregular arranged, dense irregular connective tissues के बारे में पढ़ लेते हैं. Collagen fibers and the cells here are oriented irregularly, found in the skin. Skin में पाया जाएगा. See here the irregularly arranged tissues, connective tissues, dense connective tissues, but irregular ones. एक question पूछता हूँ. Which of the following is not a type of connective tissue? Dense, loose, specialized, flexible. Which of the following is not a type of connective tissue? जवाब दो. Tell me the answer. देबू is asking sir टिश्यू क्या है? बेटा जब कुछ सेल्स जो सिमिलरली फंक्शन कर रहे वो एक साथ अरेंज होके एक फंक्शन करने लग जाते हैं तो उनको टिश्यूज कहते हैं. ठीक है. जैसे कार्डियक टिश्यूज, कार्डियक सेल्स से मिलके कार्डियक टिश्यूज बनते हैं. ठीक है. Give me the answer. Aryan, Mayank, Vasu, Jahan. Okay. Yes, that's correct. Flexible, then type of flexible connective tissue बोल के कुछ होता नहीं है. So this is not a type of connective tissue. अब एक काम करो, touch the tip of your nose और just थोड़ा सा इसको हिला के देखो. Just try to move it. It moves. Try the same thing here. Outer part of the ear. Try to move it. It moves. It does have a structure, but it seems to be very flexible. है ना? So, हम लोग बात करेंगे अब स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में. टाइप्स: कार्टिलेजिनस, बोन एंड ब्लड. दीज आर ऑल द स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज. फर्स्ट कार्टिलेज के बारे में पढ़ते हैं. कार्टिलेजिनस कनेक्टिव टिश्यूज, दीज आर फ्लेक्सिबल. अभी जो मैं दिखा रहा था, these are flexible. Okay, fine. Yes, these are flexible connective tissues. Vertebrates में mostly in the embryonal stages. Okay, cartilage is replaced by bones in the adults. Embryo stage में cartilage रहते हैं. धीरे धीरे ये this is replaced by a much more hardy, rough or I would say a tough structure, which is the bones. ठीक है. Cartilage is quite flexible. ठीक, मोशन में हेल्प करते हैं. नाउ सी हियर कार्टिलेज आई एम शोइंग यू. ओके, एम्ब्रायो स्टेज में मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट्स में कार्टिलेज रहते हैं. मोस्ट ऑफ देम आर रिप्लेस्ड बाय द बोन्स लेटर ऑन इन द एडल्ट लाइफ. तानिया, थैंक यू सो मच. लेट्स गो. यहां पे देखो नोज, द नेजल बोन, दिस इज द नेजल बोन. ये देखो बहुत हार्ड है, पर ये सामने वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे आप देखोगे
अपर लैटरल कार्टिलेज और नीचे की तरफ भी जो है दिस इज द लोअर लैटरल कार्टिलेज. फाइन. So where it is found, you can see the nose tip or the outer ear. You'll find the cartilage. Hands in adults, यहाँ पे भी cartilage है. Limb joints, ये देखो यहाँ पे, do you see the cartilage present? So limb joints पे भी cartilage है. वर्टिब्रल कॉलम के बोन्स के बीच में भी कार्टिलेज है. ओके, सी हियर. सो आई विल शो इट टू यू. हियर आर द कार्टिलेजेस. फाइन. दीज आर प्रेजेंट इन बिटवीन द एडजेसेंट बोन्स इन द वर्टिब्रल कॉलम. डोंट फॉरगेट. सेल्स ऑफ द कार्टिलेज, दे आर नोन एज द chondrocytes. They are known as the chondrocytes. Note it down. है ना? So these are known as the chondrocytes. They are enclosed by a small cavity called the lacunae. छोटे छोटे cavities रहते हैं वहां पे जिसे कहते हैं lacunae. So chondrocytes are the cells and they are enclosed by small cavities. As you can see, these are the cavities. These are known as lacunae. ठीक है? And this is embedded in a matrix. Talking about types of cartilage. Types of cartilage देखते हैं. Hyaline cartilage, elastic cartilage and the fibrocartilage. First, let's study the hyaline cartilage. These are the most abundant ones. These are the most abundant cartilage. Hyaline cartilage की बात कर रहा हूं मैं आगे पहले. यहां पे कौन से प्रोटीन है ये नोट करो. I'll talk about all the different types of proteins which are present here in different types of cartilage. Hyaline cartilage में the protein which is there is type 2 collagen. See here, type 2 collagen is present in hyaline cartilage. Fine. Where will you find? Make a chart and write it because questions can be asked. Trust me, this is a very important concept, very important point where questions can be asked. So, yes, these are found in the ribs, nose, larynx, trachea. Fine. Now, hyaline cartilage in the trachea, as you can see. Elastic cartilage. Elastic cartilage की अगर बात करूं तो प्रोटीन टाइप 2 कोलेजन एंड elastin. Elastic cartilage नाम से समझ में आ रहा है. ठीक. So here you see. These are found. You will found in the external ears. अभी बात कर रहे थे epiglottis, larynx. यहाँ पे elastic cartilage मिलेगा. See here. Fibrocartilage की बात करूं तो fibrocartilage, these have protein type 1 collagen in it, and see here how it looks like. You'll find them in the joints, you'll find them in the ligaments. ठीक है? See, fibrocartilage present in the intervertebral discs. Got it? एक सवाल पूछता हूं, जल्दी से जवाब दो. Cells of the cartilage are known as chondrocytes, osteocytes, sarcomere or the neuron. What is the correct answer? Tell me. Shukada, thank you so much. I hope ये सारे स्लाइड से आपका पढ़ाई और आसान हो जा रहा है. Can you challenge your answers right now? बेटा challenge तब करोगे जब when your answer keys are sent out. Answer keys जब मिल जाएंगे then you can do it. है ना? हाँ, करेक्ट. ए साकुमियर, तौफीक खान, नहीं बेटा, करेक्ट नहीं है. द आंसर इज ए, कॉन्ड्रोसाइट्स. अभी बात की हमने. ठीक है. कंस्ट्रक्शन साइट विजिट. आपने कोई कंस्ट्रक्शन साइट का भी विजिट किया है ना? यहाँ पे दिख रहा है ये बड़े बड़े जो आयरन बीम्स है विच आर लेड आउट, और ये बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं एक कंस्ट्रक्शन साइट का, और अदर बिल्डिंग, फैक्ट्री, कुछ भी आप बात करो. ओके. दीज आयरन बीम्स और बार्स प्रोवाइड a structural framework to this building. हमारे बॉडी के स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क कौन देते? ऑफ कोर्स द बोन्स, द स्केलेटल सिस्टम. हमारे पास 206 हड्डियां है,
206 bones in the skeletal system of the human beings. Okay, see. So let's talk about the bones now. Characteristic features. They are hard. Definitely, they are very hard. They are non-palleable. Can anyone tell me palleable मतलब क्या है? Can anyone tell me on the chats? Let me see. Can anyone tell me? Yes? इसका मतलब it cannot be bent. हाँ, ये move नहीं कर सकते. It cannot be bent. I'm perfectly fine, Bishmita. How are you? Long time. Suppress नहीं कर सकते. अदर जहाँ suppress नहीं, not flexible, bent, ये सब नहीं हो सकता. Okay? ये देखो, different structures. Ground substance of the bones are made up of the calcium salts and the collagen fibers. Okay? They give strength to the bones. इसीलिए कहा जाता है कैल्शियम लेना बहुत जरूरी है for strong bones. The cells of the bone tissues are known as the osteocytes. ठीक है? Present in spaces called the lacunae. यहाँ पे see here, these are the osteocytes. ये जो टिश्यूज, ये जो सेल्स देख रहा है, ये एक स्लाइड में दिखाया जा रहा है एंड दीज आर स्टेन्ड स्लाइड्स ऑफ द बोन टिश्यू. बोन टिश्यू को अगर स्टेन किया जाता है स्पाइडर जैसा दिखता है, इसीलिए ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं इसको. ठीक है? These cells are embedded in a matrix which is known as the lacunae. Functions. Let's talk about the functions of the bones. It interacts with the skeletal muscles which helps in the body movement. अगर bones अलग है और हमारे muscles अलग होते तो ये जो movement, motion हो पा रहा है, ये सब नहीं हो पाता. Okay, got it? Fine, clear? Perfect. Bones are those which bear the weight of our body. आज अभी मैं खड़ा हो पा रहा हूँ क्योंकि मेरे bones मेरे weight को bear कर पा रहे हैं. So if I do not take enough amount of calcium, if I don't take care of my bones, vitamin D कम हो जाते हैं, तो what will happen? I will have weak bones and my body weight cannot be supported by the skeletal system. So yes, flexibility, movement, running, swimming, I'm talking, सब कुछ में काम आता है bones and its interaction with the muscles also. Bone marrow, these are the site of the production of the blood cells, you know that, and detailed हम दूसरे chapter में पढ़ेंगे इसके बारे में. Okay, these are the sites. The bone marrow are the sites for the production of the blood cells. A quick question time. Bone tissue consists of the chondrocytes, the neurons, myofibrils or the osteocytes? Quick question. Sugata. Okay, I hope you like this, Sugata. Bishmita, you have joined that. Perfect. Very good. Fluid connective tissue. Yes, ma'am. Correct. Rani, fluid connective tissue बोलते हैं. D. Osteocytes. Is the correct answer? Yes. Blood. Yes, the fluid connective tissue. Blood, the fluid connective tissue. अच्छा आप नहीं रानी एक सेकेंड, आप बोन्स को बोल रहे हो. नहीं, बोन्स को फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू नहीं. ब्लड इज कॉल्ड द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, है ना? ओके रानी, इज इट क्लियर? आई थिंक मैंने बोन्स बोल के आगे बढ़ गया था मैं. फाइन. ब्लड इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. रानी, डिड यू गेट इट? Last type of the specialized connective tissues we are going to talk about is the blood. Now, the fluid connective tissue function, of course, transport of substance. Blood का function कितना important है हमारे body में, I think I need not emphasize this any further. You know about it, है ना? Components of the blood. A lot of things are there in the blood. White blood cells. See here. You have the red blood cells. This one.
You have the plasma. Yes. And definitely you have the platelets. रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स. इसकी इन सारे सेल्स के फंक्शंस के बारे में हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक. क्वेश्चन टाइम. Which structural tissue is present in the pinna of the ear? Loose connective tissue, cartilage, dense connective tissue, or the bones? Vasu, I think yes, I'm getting the your answers quite late. That's the reason when I'm asking a question and I'm waiting for the answer, but तब तक answer नहीं आ रहा है. When I'm talking about something else, answer आ रहा है. I think that's a lag in the channel itself. YouTube में थोड़ा सा lag हो रहा है. That's okay. Fine. So answer is yes. I can see the answer now. B. It's coming up as B, cartilage. Definitely, it's correct. B is the correct answer. Which structural tissue is present in the pinna of the ear? It's the cartilage. You know, एक स्टोरी बोलता हूँ. एक ना एंशियंट जापानीज एक राक्षस के बारे में बात करते थे कि जो कि बाहर निकलता था एंड दे से दैट इट यूज्ड टू कम आउट इन सर्च ऑफ द विक्टिम्स टू फीड ऑन, है ना. ये स्केलेटल पूरा स्केलेटन है एंड ह्यूज वन. ओके, सो एक बार इसका मिथ बर्स्ट करते हैं. स्केलेटन एक सिर्फ फ्रेमवर्क है. स्केलेटन एक फ्रेमवर्क है. वहां पे मैं क्या दिखा रहा था? वो लोग कहते थे कि ये स्केलेटन ऐसे ऐसे आके यू नो दे यूज्ड टू कैच होल्ड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड फिनिश देम. बट स्केलेटन बस फ्रेमवर्क है. इट कैन नॉट मूव. स्केलेटन अकेले मूव नहीं कर सकते हैं. Okay, it has to interact with the muscles and there has to be a proper coordination between the bones and the muscles for the movements to happen. समझ रहे हो? So, वो कहानी है बस डराने के लिए. The skeleton cannot move by itself at all. The skeleton. So, what is required is the muscle tissue. That is what I'm going to talk about right now. Okay? Each muscle is made up of many long cylindrical fibers arranged in पैरेलल अरेज. मैं दिखा देता हूं. देखो, पैरेलल अरेज में ये अरेंज्ड है. गॉट इट? अब मसल फाइबर्स आर कंपोज्ड ऑफ फाइन फाइबर्स कॉल्ड द मायोफाइब्रल्स. सो ईच ऑफ देम, ये जो फाइबर्स एक एक दिख रहा है मायोफाइब्रल्स है. अच्छा, ध्यान से सुनना है बिकॉज क्वेश्चंस इससे पूछा जा सकता है. गॉट इट? दीज आर द मायोफाइब्रल्स. नाउ फंक्शंस, मूवमेंट ऑफ द बॉडी में हेल्प करते हैं. ऑफ कोर्स इन सारे मूवमेंट, आप अगर जिम करने जाते हो, यू यूटिलाइज अ लॉट ऑफ यू नो मसल्स ऑफ योर बॉडी एंड दैट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द मसल्स एंड योर स्केलेटल सिस्टम. नाउ इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस कॉन्ट्रैक्ट, इट कैन शॉर्टन, इट कैन रिलैक्स, इट कैन लेंथन. साइज लंबा हो जाएगा, साइज शॉर्ट हो सकता है. गॉट इट? सो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो सकते हैं. देखो छोटा सा एनिमेशन, हाउ इट लुक्स लाइक. दिख रहा है? ये जो बीच में स्पेस है ना, कॉन्ट्रैक्शन टाइम अंदर घुस जाते तो शॉर्ट हो जाता है. फाइन, इट बिकम्स शॉर्टर. द रिटर्न टू द अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेट. ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के जो कोऑर्डिनेशन है, इसके बेसिस पे ही मूवमेंट हो रहा है. कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के बेसिस पे ही मूवमेंट होते हैं. ओके, फाइन. मसल टिश्यूज, स्केलेटल मसल टिश्यू है, स्मूथ मसल टिश्यूज एंड द कार्डियक टिश्यूज. स्केलेटल मसल टिश्यूज which help in the movement, of course. Skeletal muscle tissue, they are closely attached to the skeletal bones. Muscle fibers are they are striated muscles. अब ये देखो, striated appearance, striations दिख रहा है, तो इसीलिए इसको striated muscles भी कहते हैं. See, अगर बाइसेप्स की बात करूं, यहां पे देख रहे हो कि जो striated muscles है, ये बंडल कर रहे हैं टुगेदर इन अ पैरेलल फैशन. ये पैरेलल फैशन में striated muscles बंडल कर रहे हैं.
इसीलिए जब आप फ्लेक्स करते हो इस तरीके से स्वेल हो जाता है. Striatal muscles, skeletal muscles, muscle fibers are bundled together in a parallel fashion. The sheath of tough connective tissue, which encloses several bundles of the muscle fibers, and ये देखो, okay? Wait. Try this out. Try stretching your fingers, like you can see here. Your body moves immediately when you decide to perform this action. So, अब if I tell you कि स्टमक के मसल को मूव कर सकते हो नहीं, राइट? स्टमक अपने आप ही चल रहा है. ओके, सो ऐसे बहुत सारे मसल्स है जो आप खुद कंट्रोल में रख सकते हो, बाकी कुछ मसल्स है जो आप कंट्रोल में नहीं रख सकते. वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी, यू नो अबाउट इट, राइट? स्मूथ मसल्स, ठीक है? These are involuntary muscles. These are involuntary muscles. These are found in the walls of some internal organs like the stomach and the intestine, as I am showing you here. ठीक है? Involuntary because we cannot control their movement. Smooth muscle tissues. See here. Structure. They are, the striations are absent here. Previously मैं क्या दिखा रहा था? यहाँ पे skeletal muscles में striations present है. यहाँ पे striations absent है. Tapers at both the ends. मतलब end में tapering. पतला, thin हो जाता है, pointed हो जाता है. Got it? So, see here. The cell junctions hold the cells together and they are bundled together in the connective sheath. See here. अब मैं बात करता हूं मसल फटीग के. कभी कभी अगर आप बहुत ज्यादा दौड़ते हो, बहुत ज्यादा स्ट्रेनस कुछ काम हो गया, आपके मसल्स टायर्ड हो जाता है, आप खुद टायर्ड हो जाते हो, और फिर यू विल सी वी स्टार्ट लिम्पिंग. आप सीधा चल नहीं पाते हो, बहुत दिक्कत होता है, बहुत पेन होता है. सो मसल फटीग हो जाता है, राइट? कंटिन्यूस वर्क के वजह से मसल फटीग हो जाता है. बट सारे मसल फटीग नहीं होते हैं. एंड वन बिग एग्जांपल is this. The most hard working of them are the cardiac muscles. On an average, it beats 72 times per minute. और पूरी जिंदगी भर जब तक हम लोग जिंदा रहते हैं ये बीट करते रहते हैं. It does not get fatigued. In fact, it cannot afford to get fatigued. कभी भी ये fatigue हो गया तो we are dead. Fine. So cardiac muscles is what we'll study right now. Contractile tissues. हाँ, स्लाइड्स में मिल जाएगा. Contractile tissue only in the heart. Fine, see here. This is a unique type of contractile tissues which aids in the beating of the heart. Heart beat करने में help करते हैं. The cells are stuck together. The intercalated discs. These are the communication junctions which are present in these cardiac muscle tissues. See here. मैं दिखा देता हूँ. Few cell junctions दिख रहा है? Few cell junctions. So intercalated discs यहाँ पे है, which are the communication junctions. They are able to communicate between each other. So when one of the cells receives signals for contraction, this message is relayed among the other cells. तो सब मिलके कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, राइट? एक सेल को अगर आया मैसेज कि आप कॉन्ट्रैक्ट करो, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कर गया, बाकी नहीं कॉन्ट्रैक्ट किया, तो कैसे काम होगा? The whole organ has to contract, right? So coordinated movement की जरूरत है और ये junctions काम आता है. Fine. So proper relaying of messages happens through all these cells. You can see the intercalated discs over here. Question time. Smooth muscles are, see the options and give me the correct answer. Smooth muscles are immune to fatigue. Yes, Shruti. Give me the answer. Smooth muscles are लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस्ड. यस मयंक, लैक्टिक एसिड के बाद क्यों ये क्रैम्प जैसा होता है, दर्द क्यों होता है, विल टॉक अबाउट इट इन रेस्पिरेशन. जब मैं पढ़ाऊंगा तब बात करेंगे, ठीक है? यस, परफेक्ट, वेरी गुड. इनवॉलंटरी, फ्यूसिफॉर्म, नॉन स्ट्राटेड, स्मूथ मसल्स. Levels of organization, yes, cell, tissue, organ system, organism. Fine. Evolutionary trends, complexity on the organ holds a discernible trend.
ठीक है, इसमें we have seen with the as the complexity of the organs, organisms have increased, so complexity in the organ systems and the organs have also increased a lot. So these are the evolutionary trends. So इसको पढ़ने के लिए morphology and anatomy समझना जरूरी है. So morphology यहाँ पे external features को कहलाते हैं. So morphology मतलब जब आप जो चीज देख सकते हो, देख के समझ सकते हो, those are morphological features. Appearance of the organs. Anatomy is on the other hand internal features, मतलब क्रॉस सेक्शन लेके देखो कि कैसा है, जैसे मैं बोल रहा हूँ striated appearance, ठीक है. So internal features. Summary: connective tissues, we have studied about the loose connective tissue, we have studied about the dense connective tissue, we have also studied about specialized connective tissue. लूज में हमने पढ़ा है एरियोलर, एडिपोस, ये सब आपको पता होना चाहिए, एग्जाम्पल्स, इनके फीचर्स एंड कहाँ मिलेगा. Dense connective tissue, regular and irregular, and your specialized connective tissues, cartilage, bone and blood is what we have studied. Today we have also studied the muscle tissues, skeletal muscles, smooth muscles and the cardiac muscle tissues. Fine. So आज के लिए इतना ही. What you have to do? What you have to do is of course revise next class के लिए. Wednesday same 6 PM we will see each other and पढ़ेंगे. भाग्या क्या बोलूं, स्पर्मेशन वाला क्वेश्चन जो नीट में आया था वो सही होगा या नहीं सर? सही होगा या नहीं सर, मतलब डिपेंड करेगा ना आप क्या जवाब दे रहे हो उसका. रानी पूछ रहे हो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉरीफेरा इज बेस्ड ऑन. बेटा एनिमल किंगडम में जो क्लासिफिकेशन किया गया है, इट हैज बीन बेस्ड ऑन ऑल द क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया. फॉर एग्जांपल सिलोम है या नहीं, जर्मलेस है या नहीं, सिमेट्री का क्या हाल है, ये सब डिपेंड करता है जिसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन करा गया है. फाइन, ओके. सो कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग योर कॉन्सेप्ट्स टुगेदर. जो क्वेश्चंस है आप कमेंट सेक्शन में डालते रहो. मेरी टीम है हु आर वर्किंग डे एंड नाइट. रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हो, बहुत जल्दी ही रिजल्ट आने वाला है. सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट. Rest of the students who are targeting for the next year and the following years, all the best for you also. Keep revising. हमारे साथ जुड़े रहो. You'll gain a lot, and it's all for your benefit. So for today, bye bye. Good night. Take care.